guys, welcome to my video. So today I am going to discuss about structured query language SQL. Before starting the video, I want to tell you something that please do not skip the video. Watch it till the end without skipping so that you can get a crystal clear concept after watching this video. मान लीजिए आपने एक टेबल क्रिएट की जिसमें आपने स्टूडेंट के नाम लिखे, उसका रोल नंबर लिखा, उसके मार्क्स लिखे। तो अब आपने एक रो क्रिएट की अपना डाटा इनपुट करके। मान लीजिए आपने राहुल लिखा और अगर आप राहुल लिखते हैं तो उसमें आप सौम्य के मार्क्स तो एंटर करेंगे नहीं। That means these all values which we put in a table that are related to each other and that relation is the same. And now the domain. अगर आपने मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक ना फंक्शन होता है, उसकी हम इतना डोमेन होता है जिसमें से हम कुछ वैल्यूज न उठाते हैं और उस फंक्शन में डालते हैं, फिर वो हमें आउटपुट देता है डोमेन रेंज। ये भी वही है, पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। नाउ थर्ड पॉइंट में टपल, टपल मतलब रो, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, डिग्री मतलब नंबर ऑफ रोज, कार्डिनैलिटी मींस नंबर ऑफ कॉलम्स। प्राइमरी की, प्राइमरी की एक तरह से एक मान लीजिए आपने टेबल बनाई, उसमें प्राइमरी की यूज होती है अगर हम अपने किसी रो को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस रो को एक्सेस करने के लिए एक तरह से हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो हम उस यूनिक आइडेंटिटी को प्राइमरी की हेल्प से सेट कर सकते हैं। अब यूनिक आइडेंटिटी मतलब उस टेबल में जितनी भी एंट्रीज उस टेबल में आपने की हैं, उनमें से जो आपने प्राइमरी की सेट की है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप न एक क्लास में, तो मान लीजिए आपने एक न टेबल बनाई जिसमें एक क्लास की, उसमें एक प्राइमरी की रोल नंबर्स होंगे क्योंकि एक क्लास में एक बच्चे के सेम रोल नंबर नहीं होते, पर लेकिन वही आप इसे ले जाते हैं इंट्रा स्कूल लेवल पे तो आपको एडमिशन नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैंडिडेट की are those keys which have potential to be a primary key but they are unfortunately cannot become a primary key. For example, roll number. Alternate key, a candidate key which is not a primary key is a alternate key. Types of SQL command. There are three types of SQL commands: DDL, DML and DCL. First, let's we talk about DCL because it is not that much important. It is a data control language and how we use that. मान लीजिए आपने कभी WhatsApp तो यूज किया ही होगा, ऑफ कोर्स कर रहे होंगे। उसमें अगर आप WhatsApp ग्रुप क्रिएट करते हैं तो आप उस ग्रुप के ग्रुप एडमिन होते हैं और आप उस ग्रुप में अगर कोई दूसरे मेंबर्स को भी ज्वाइन करते हैं तो आप उनमें से कुछ लोगों को ग्रुप एडमिन और बनाते हैं। या फिर आपने कभी क्लैश ऑफ क्लैन खेला हो तो फिर आप जानते होंगे कि अगर हम कोई क्लैन ज्वाइन करते हैं तो उसमें पहले फर्स्ट पोजीशन पे आता है लीडर, फिर को लीडर, फिर ऐसे नीचे जाते जाते लास्ट आता है मेंबर। तो फिर उसी तरह एसक्यूएल में भी होता है। मान लीजिए हमारे पास एक लोगों का ग्रुप है जो एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, उसको एक डेटाबेस दिया गया और उसमें हर ग्रुप का मेंबर अलग अलग उस डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स पे वर्क कर रहा है। तो हम उसको डेजिग्नेशन दे सकते हैं हर पर्सन को कि वो कौन सी
न चीजें खोल सकता है, कौन सी नहीं, means manipulating the permission or access rights to the table. Next, what comes is that DDL commands. So basically, DDL commands are those commands which are used to create the structure in which we are going to store our data. For example, through these set of commands, we can create table, database, and also we can delete also through this DDL data definition language. So it contains a set of commands that follows us to perform tasks related to definition, data definition. It specifies the storage structure and access method for database system like create, alter, drop, etc. जैसे कि हम देखते हैं इसमें, अब मान लीजिए मुझे चेक करना है कि मेरे लैपटॉप में कितने डेटाबेसेस हैं. शो डेटाबेसेस, ऐसे इसमें जरूर लगाएं. डेटाबेस लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसमें सेमी कॉलन का सिंबल लगाना जरूरी है, वरना आपका कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो ये सारी वो लिस्ट खुल के आ गई जो मेरे सिस्टम में जितने भी डेटाबेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो देती है. अब हम ये तो पता चल गया कि हम डेटाबेस कैसे पता कर सकते हैं. मान लीजिए हमको ये देखना है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम इन डेटाबेस को एक्सेस कैसे करेंगे. जैसे कि मुझे एक्सेस करना है MySQL. बाय द वे मैं आपको बता दूं, दिस इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, SYS. आप इन सबको डिलीट नहीं कर सकते, आप इनको भले ओपन कर सकें. जैसे यूज MySQL. तो इस तरह से हम डिफरेंट डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं. और मान लीजिए अगर आपको एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना हो तो आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस. यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आर्यन, और फिर आप सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे. आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एक नया डेटाबेस क्रिएट हो चुका है. अब इसको आप चेक करने के लिए वापस से टाइप करें शो डेटाबेसेस. ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक न्यू डेटाबेस इसमें आ चुका है. तो चलिए हम उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं. यूज आर्यन डेटाबेस चेंज, यानी कि हमने उस डेटाबेस को एक्सेस कर लिया है. नाउ अब इस डेटाबेस में कोई टेबल तो है नहीं. जैसे अगर मैं अभी टाइप करता हूँ शो टेबल्स एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें अभी एक भी टेबल नहीं है. तो इसमें हमें एक टेबल क्रिएट करनी होगी. तो ये जो टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, ये सब है DDL कमांड्स, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. तो मैं जल्दी से अभी टेबल क्रिएट करता हूँ. ये टेबल स्टूडेंट, क्या आपको इसमें एरर पता चला? दरअसल अगर आप टेबल बनाते हैं तो आप टेबल ऐसे डायरेक्टली नहीं बना सकते.
आपको टेबल बनाने के साथ साथ उसमें ये भी डिफाइन करना होता है कि कौन से कॉलम में आप उस कॉलम का नाम आपको डिफाइन करना होता है। तो इसमें हम इस तरह से टेबल बनाएंगे कि टेबल स्टूडेंट। अब हम इसमें इस तरह से इसके सारे कॉलम्स डिफाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम नेम का, मैं नेम, फिर स्पेस। याद रखिए अगर आपको इसमें न ये न स्पेशल कैरेक्टर्स, आप इसमें स्पेस यूज नहीं कर सकते। अगर आपको जैसे लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो फिर आप ऐसे नेम ऑफ स्टूडेंट नहीं लिख सकते। आपको इसमें अंडरस्कोर का यूज करना होगा स्टूडेंट का, इस तरह से अगर आप लिखना चाहते हैं तो। वरना क्योंकि स्पेस देने के बाद हमें ये डिफाइन करना होता है कि वो कौन सा डेटा टाइप है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस करने वाले हैं कि एसक्यूएल में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। जैसे वार्चर, ये एक डेटा टाइप है जिसके थ्रू हम उस कॉलम में सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, then that means it is a limit, यानी कि आप 15 लेटर से ज़्यादा इस नेम के कॉलम में कुछ नहीं लिख सकते। और ये स्पेस भी इंक्लूड करता है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करता है। और अगर आपको दूसरे कॉलम को डिफाइन करना हो तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर आप दूसरे टेबल को डिफाइन, दूसरे कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एड्रेस, देन आई एम राइटिंग वाचर 20, क्योंकि एड्रेस जनरली बड़े होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एडमिशन नंबर। तो इसमें हम यूज करेंगे इंटीजर डेटा टाइप। फिर उसके बाद आता है मार्क्स जनरली डेसिमल में भी हो सकता है, और अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यूज इनपुट करनी है तो आप यूज करेंगे फ्लोट डाटा टाइप का। अदरवाइज अगर आपको नंबर्स इनपुट करने, न्यूमेरिक वैल्यूज इनपुट करनी है तो आप यूज करिए इंट। ना हो तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जी हाँ, ये आपको एक एरर देगा। एक्चुअली मेरे थ्रू ही किया गया एरर है। अगर आपको कोई चीज कॉपी करनी है तो आप सिंपली इतने पोर्शन को सिलेक्ट करें, लेफ्ट राइट क्लिक करें और एक और बार कहीं भी राइट क्लिक कर दें। जहाँ पे आपका कर्सर होगा, दिस ब्लिंकिंग पॉइंट, वहाँ पे वो चीज पेस्ट हो जाएगी। चलिए तो अब देखते हैं कि क्या हमारा ये जो है ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं। और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर हमें सच में कोई डेटाबेस डिलीट करना है तो सबसे पहले हम जनरली लिखते हैं शो डेटाबेसेस। ये डेटाबेसेस आ गए हमारे सामने। मान लीजिए मुझे ये GDE नाम का ये डेटाबेस डिलीट करना है, तो मैं टाइप करूँगा ड्रॉप डेटाबेस GDE एंड डन। अब वो हमारे डेटाबेस की लिस्ट में नहीं है। शो डेटाबेस, देखिए वो गायब हो चुका है। और अभी हमने जो ऊपर टेबल बनाई थी, हमें उसे चेक भी तो करना है कि प्रॉपर्ली बनी है कि नहीं।
तो हम इसमें क्या ये लिखें, शो स्टूडेंट, एक्चुअली नहीं, अगर आप ये लिखेंगे तो एरर आएगा। इसके लिए आप लिखिए डिस्क्राइब, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं DESC स्टूडेंट्स, ओनली स्टूडेंट। आपने जो टेबल का नाम क्रिएट किया था, आपको वही डिक्टो नेम यहाँ पे लिखना है। अगर आपने गड़बड़ की तो ये एक एरर शो करेगा। ये आपके सामने आ गई वो टेबल। मैंने यहाँ पे नेम लिखा था, पहले कॉलम में नेम, देन एड्रेस, देन एडमिशन नंबर, मार्क्स। यहाँ पे डेटा टाइप भी लिखा हुआ है जो मैंने डिफाइन किया था, नल, कीज, और ये डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा, ये सब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए हमारा DDL पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। So as far till now we have discussed DDL, and now we are going to discuss about what are DML commands. DML stands for Data Manipulation Language. It is a set of commands which we can use to input the data into the table or the structure we have created to store our data. Commands that allow us to perform data manipulations like select, insert, delete, and update. And these are known as DML, Data Manipulation Language. These are the data types in MySQL. First is char, second is varchar. Both of them looks quite similar. They act same. Now if the limit is 5 to both of them, then if you write a letter that may contain letters more than 5, then it will show only those letters which come in that range which you have defined. So for example, if you defined it as till 5, same here, और मान लीजिए आपने ये चार और वर्ड चार में दोनों में ये डिफाइन कर दिया कि वो 5 से ज़्यादा लेटर नहीं लेगा। अगर आप कोई 5 से ज़्यादा लेटर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने RN दिग्गल ले लिया, तो उसमें से वो सिर्फ 5 लेटर्स चुनेगा और बाकी सारे जो लेटर्स बचे होंगे, दिग्गल और स्पेस, वो उनको काउंट नहीं करेगा। तो ये होता है दोनों चार में भी और वर्ड चार में भी। बट अगर आप 5 से कुछ कम लें, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया राज, जी, तो इसमें दो, ये 1 2 3 4 5, तो इसमें ये तो टोटल पूरा हो गया 3, ये तो शो करेगा। पर लेकिन अगर आप शेयर में देखें तो यहाँ पे ये 2 स्पेस आपको और देगा, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस। पर लेकिन अगर वहीं आप यूज करते हैं varchar, तो फिर इसमें क्या करेगा, इसमें ये सिर्फ राज शो करेगा। ये बीच में जो 2 गैप से क्रिएट होती हैं, ये इन्हें शो नहीं करेगा, फिर शो ओनली दिस। So now next is int, tiny int, small int, big int. These all are integer type values. These are string type. These are integer type. You can see the range. Mm, for normally we use int. For small numbers we use tiny int. For bigger than tiny there is small int, and then
If you want something bigger than this, bigger than integer, then you can go for the big int, which could carry the most number of digit. Now next term is float. I already told you that the float is decimal and it is precise up to 23 digits. Next is date. The convention is quite different. It goes like year, then month, then day. This is time. Its convention is same. Hours, minute, then second. Date time could be used to make our database more effective and efficient, because database management means you are managing large amount of data in less space. Then these kind of things could help you out. It combines the date and time, and your one column of date or time could be saved by using this thing. Similarly, double is decimal, 24 to 23. Decimal is double stored as string. Now ये सब मैंने आपको दिखा दिया था कि हम डाटाबेस को कैसे देख सकते हैं, हमारे पीसी में कितनी टेबल्स हैं वो हम कैसे देख सकते हैं, हम डाटाबेस इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर हमें डेटाबेस को डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप डेटाबेस abc यानी कि अपने डेटाबेस का नाम देके उसको डिलीट कर सकते हैं। सेमीकोलन सिंबल इसमें इम्पोर्टेंट है, वरना आपका कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपको टेबल भी रिमूव करनी है तो आप कर सकते हैं ड्रॉप टेबल नेम इस सिंबल के थ्रू। This is the way to access the database। एंड अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो मैंने आपको बताया था इसमें आप डायरेक्टली टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, इसमें आपको कॉलम्स भी डिफाइन करने होते हैं कि कॉलम का क्या नाम होगा, उसके क्या डेटा टाइप्स होंगे, तो वो सब आपको डिफाइन करना पड़ता है while making a table। और डिस्क्राइब कमांड हम यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए हमने जो टेबल बनाई है वो प्रॉपरली क्रिएट हुई है कि नहीं, ये भी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया था। To insert value, now we have reached to DML commands, means data manipulation language। Through this data manipulation language we can store data, select it, and we can also select data conditionally. That means select all from students. This star means all. Select star means all from students. Student is the table name where class is 4. You could choose any parameter to find any particular row, just like this. Now if there is class 4, then only those row will be appear with all the information, with all the columns you've made it, in which class will be common of all rows, that is 4th, because you have selected show me only those students where their class is 4, that is why it is showing you 4. Similarly you can see there select first name class from student. That means if there is a table named as a student, then it will show you
the first name and the class from that table to you. To modify or update entries in the table, update command can be used. It is used as update student set class equal to 5 where class equal to 4. मान लीजिए अगर आप दूसरी क्लास में प्रमोट होते हैं या फिर ना जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो फिर in a bulk quantity na each class each section gets promoted to next class. So a database management team will not create a new table or new database for that. They just update it through this syntax like this. For example, let me show you how it works. Insert into student values. यहाँ पे आपको लिखना है insert into, फिर टेबल का नाम, फिर वैल्यूज लिखनी है, फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन पहले से ही लगा दीजिए क्योंकि कभी कभार हम भूल जाते हैं लगाने। अब इसमें हम एक एक करके अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं उसको ना कोटेशन मार्क्स में स्टोर करते हैं, जैसे नेम हो गया RM कॉमा। अब अगर हमें दूसरे ना कॉलम में शिफ्ट होना है तो उसके लिए हम कॉमा यूज करेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं दूसरा है एड्रेस का कॉलम, तो इसमें मान लीजिए मैंने लिख दिया राजनगर कॉमा। अब यहाँ पे एडमिशन नंबर, तो मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली एक एडमिशन नंबर लिख दे रहा हूँ। देन last row is of marks. So as I have used the float one, so that means I could use the decimal values in this also. So let us suppose I write 92.93.6. Now let's see will it execute or not. No, it will not because unknown column Rajnagar. So if you can closely see that I have not put this Rajnagar in quotation marks. So that is why this error was raised. So if I want to copy it, just select it, right click, then again right click, okay, paste it here. Now just simply apply some quotation marks here. And then after applying that semicolon symbol, if you press enter key, okay, now the value has been saved. Now let's enter some other values like this. For example, insert into table name value bracket semicolon okay. Okay. Then you must put the values like this, and remember always put string values in quotation mark.
Again, an error got raised. And by mistake, I wrote wrong value of wrong spelling of values. So you have to take care of these things. Now if we execute it, it executed properly. Now if I want to see how do my data which I have put into this table looks like, then write select. For all you use symbol list select star from student. So here we go. This is name, address, admission number and marks. The table has been managed. तो अगर आपको इसी तरह से टेबल मैनेजमेंट करनी है तो आप फर्दर इसे देख सकते हैं. अब हम वन स्टेप आगे चलेंगे. इस कॉन्सेप्ट को मैं वापस से कंटिन्यू करूंगा, but with some advanced concept like this. Now I want to delete this Amar person from my table. So what would I do? I would simply use delete from student means table name where first name is Amar. So that is how you can delete a table. So now if you want to select a general form of, तो एक तरह से जनरल फॉर्म है कि किस तरह से सिलेक्ट सिंटेक्स जो है वो वर्क करता है. आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स है जो कि हम ना वेयर जैसी जगह भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्लास लेस देन और इक्वल टू 5 और क्लास इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि बच्चे 4th क्लास के नहीं होने चाहिए, या फिर और भी सारे लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल select all from name of the table student where city is null. Null means if you have created a table and you put some values, like you put column empty, then that column would consider as null. Let me demonstrate you how it works. Now for example, I am going to insert a value. So I am going to insert a value in which I am not addressing address of this child. For example, insert into student values. Now I'm going to write the name. For example, I wrote Harsh, comma. I'm not giving. I'm leaving it blank. Let's see what happens.
will show you an error. Now, a very important concept starts from here. Have a close look. Insert into student. There is a mistake I made is that there is no table such as rn.students present, and what I have done is this s. So let me explain you how do this work. How does it work? So before that, here you can define in which columns you want to put the values. For example, insert into students. Now the new things come from here is that after student I didn't wrote anything, but now I am defining. You have to take name, admission number, and marks only from those things. So, oh sorry, I forgot to make corrections. I executed the same thing. We have to remove this s from here because the table name is a student, not students. And now everything is perfectly clear. Now I will type select all from, and this is here you can see null. So this is what we call as null. That means no value is stored in this. So this is null. Now I want to delete this thing because it is an error. If anyone wants to see his address, then it is not appropriate. But why should I delete it? I can update it. Update student set address equal to garden where address is null. Wait a second, there is a serious problem with my keyboard. I always get this sign automatically. Excuse me for that. That is why it has created an error.
Okay, so now you can see that the code, the syntax has been successfully executed. Now if I want to delete it, delete from student where name, oh, again that problem, yes, where name is equal to is equal to now. Oh sorry, I forgot to show you the changes which I have made here, but now I can show you the current table. Select star from, so here you see this thing has been updated, and now yes, now if I execute a tree again, wait a second, that's what that's what I there it is. Now if I can press enter, one row affected. Here 0 rows were affected because this thing was not matching, but as soon as it got matched, this thing has been deleted. Now you can see. Now it is a very important concept of identifying names by a hint. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आया और उसने आपसे कहा कि मुझे ऐसे बंदे का नाम चाहिए जिसका फर्स्ट लेटर ए से शुरू होता हो, तो आप ये से करेंगे सिलेक्ट all from table name where name like this. So here like is very important thing. This is the new command which we are using here, and like means उसके जैसा हो. हम यहाँ पे आप दो तरह की चीज देख सकते हैं, एक है परसेंटेज और दूसरी तरफ है अंडरस्कोर. सो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने ए लिखा और उसके आगे परसेंटेज लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे फर्स्ट लेटर ए से शुरू होना चाहिए. That means it doesn't matter whether that boy is Aryan, Akul or someone else, but if you apply underscore, then the places matter. For example, I want to find a person whose third name means his name's third letter starts from P. Then I will write 1, 2, and on third position I will write P and then this percentage sign. That means I don't know what is his name, how long it is, but there is a P on the third position, first, second, third.
If you want to find a person in which there is a PQ together in his name, then you will percentage PQ, and then you will again write percentage, so that this thing will show you that I don't know how long his name is, where PQ is coming together, but for sure PQ is coming in his name. So that's how you can do all these things. मुझे एक आदमी का नाम चाहिए था जिसका नाम ए से शुरू हो, तो मैंने ये यूज किया, select all from students where name like this. मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ. As you can see, it showed, ये मुझे सिर्फ आर्यन दिखा रहा है. और ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने ये सर्च किया था, मुझे उन्हीं लोगों के नाम दिखा जिनका फर्स्ट लेटर ए से शुरू होता, इसलिए इसने मुझे सिर्फ आर्यन शो किया. सो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. ये है ऑर्डरिंग क्वेरी रिजल्ट, ऑर्डर बाय क्लॉज. सो हम अपने डेटा को ऑर्डर में भी कर सकते हैं. जैसे query result can be ordered in ascending order A to Z or descending order Z to A, ordered as per any column. Default is ascending order. इसका सिंटेक्स ये है, इसमें semicolon sign is important. Select star from students table name, order by. Here order by is the main thing which we are using for this. But now if we want to arrange it in descending order, then what we are going to do? Then we will write select, just we will add descending. Let's execute it, that how does it works. Select all from student, select all from student, and here you see इसमें इसने नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इसलिए पहले ये निखिल शो कर रहा है, फिर ये आर्यन शो कर रहा है. So now we will learn about creating table with constraints. आपने कभी अगर गूगल फॉर्म फिल किया हो तो उसमें आपने देखा होगा कोई कुछ जगह इस तरह से स्टार बना होता है. वो स्टार ये इंडिकेट करता है कि आप इस जगह को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करना ही पड़ेगा. सिमिलरली हम कंस्ट्रेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि
अगर हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल में जो इनपुट्स होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग फॉलो होने चाहिए। अगर हम टेबल में कुछ इनपुट देंगे तो इन कॉन्स्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंगली ही फॉलो होंगे। फर्स्ट इज नॉट नल, दैट मीन्स ये वही चीज है कि आप कोई चीज एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। जिस तरह मैंने आपको उसका एड्रेस एम्प्टी करके दिखाया था, इंडेक्स इट इज यूज्ड टू क्रिएट and deliver data from the database very quickly. Creating database with constraints. This is the syntax. For example, you want to give id as a primary key, so you will use id is the name of the first column, then int is the data type, not null primary key. आपने यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट दिए हैं। हाँ, और अगर हम चाहें तो एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट दे सकते हैं बाय यूजिंग स्पेस, नॉट नल प्राइमरी की आर टू कंस्ट्रेंट्स। लास्ट नेम वर्चुअल नॉट नल, यानी कि आप लास्ट नेम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। फर्स्ट नेम एज इंट सिटी वर्चुअल डिफॉल्ट जयपुर। अगर यूजर कोई सिटी इनपुट नहीं करता है तो इसमें डिफॉल्ट सिटी जयपुर इनपुट हो जाएगी। कंस्ट्रेंट check person, check age is greater than equal to 18। अगर किसी की एज लेस देन 18 होगी तो वो उस टेबल में इंक्लूड नहीं होगा। तो चलिए हम कुछ इसी तरह का कंस्ट्रेंट फुल टेबल बना के देखते हैं। लेट्स सी क्या होता है। So I'm going to write here table constraint is the name of the table. What happened? Create table constraint is the name of the table, so it is not necessary that you always write constraint. It is the name of the table. Constraint. Now you will see name virtual not null comma admission number int not null primary key address char 20 virtual is 20 for default is
And now everything is ready to be executed. Commands. यहाँ पे एक्चुअली एड्रेस थोड़ा छोटा पड़ गया है, so let me correct this. Here we go. Now let's try to execute this. There was a little bit mistake, but now I found it and let's check it. And now it has executed. And now I will type describe table constraint, then this is what you can see. Now I am going to write some 4-5 entries and then we will check how does it works. Insert into constraint values. Wait a second, I'm leaving it empty, just like this. Now, as you can see, I'm not defining address here, and it will automatically take Shalimar Gardens Hyderabad as a default. Now, let's see. Oh, I forgot to mention it as float, so I cannot take decimal values. I have to take it in an integer form. So now it will work. There is a comma there. Yes. Now insert it. And now similarly I will insert 4 more values like this with different name and of course with different admission number. Otherwise it will not select it.
Now it is almost done, and then now I will select the table, select all from constraint, and this is finally done. As you can see, I have not defined address in anything, so it took Shalimar Garden as a default for every. So thank you very much for watching. If you like the video, please click on like button, share it, comment down below so I can get idea that what my audience want from me, and I will see you in the next video. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye.